Hello everyone, welcome to Simran IAS Academy. Today we will discuss about the topic that how to prepare for the essay exam. In this video we will discuss how to prepare for the essay exam, what the UPSC demands from you and how you can proceed to score one of the highest marks in the exam. Okay, so some basics about the essay exam, we will see that. So what is it? The paper will be of 250 marks. The essay exam will be of 250 marks like the GS papers, and it can be written in either the English language or the Hindi language or in any other scheduled language mentioned in the 8th schedule of the constitution. Okay, so all the main papers, the GS 1, 2, 3, 4 papers, essay and the optional papers you can write in either English, Hindi or in any other language mentioned in the 8th schedule of the constitution. There is a list of 22 languages. You can check that, okay, in the UPSC notification. So candidates may be required. अब देखते हैं कि यूपीएससी क्या जो है जो मेंस का जो सिलेबस यूपीएससी प्रोवाइड करता है, बट यूपीएससी gives the information about the essay exam in that notification. Okay, so UPSC says that candidates may be required to write essays on multiple topics. Okay, so the topics can be from polity, history, economy, art and culture, environment, or the recent trend is that an entire section is from the philosophical topics only. There are basically two sections, section A and B. 4 topics are there in section A, topics are there in section B. You have to choose a topic each from section A and B and write an essay in about 1000 to 1200 words. Okay, so अभी 2-3 साल से, पिछले 2-3 साल से 2018 के बाद से 2019 और 2020 का जो मेंस हुआ है उसके अंदर ये ट्रेंड अब शुरू हो गया है कि पूरा एक जो एंटायर पूरा सेक्शन है उसके जो चारों टॉपिक्स हैं वो फिलोसफिकल टॉपिक्स ही यूपीएससी दे रहा है। इसका मतलब है कि यूपीएससी चाहता है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनकी फिलोसफिकल टॉपिक्स के ऊपर वो किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं और किस तरीके से वो अपनी जो मेन जो दूसरे जीएस सब्जेक्ट्स की नॉलेज है या फिर जो उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव जो कैपेबिलिटीज है वो उसको कैसे लिंक कर पा रहे हैं उन फिलोसफिकल टॉपिक्स के साथ। ओके, तो ये अब यूपीएससी चेक कर रहा है क्योंकि पूरा एक एंटायर सेक्शन फिलोसफिकल टॉपिक्स पर दे रहा है, तो कोई ऐसा चांस है ही नहीं कि आप फिलोसफिकल टॉपिक्स जो है फिलोसफिकल टॉपिक्स प्रैक्टिस ना करके भी आप एसए के अंदर अच्छा स्कोर कर लें। ये 2018 तक मैक्सिमम ये वैलिड था, पर 2018 के बाद से स्पेशली 2019 और 2020 के मेंस में यूपीएससी ने एहसास कर दिया है कि अगर आपको एसए के अंदर अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको जो आपके फिलोसफिकल जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर आपको ग्रिप जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, तभी आप जो है फिलोसफिकल टॉपिक्स के अंदर अच्छा स्कोर कर पाएंगे और ओवरऑल भी आप एसए के अंदर वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम जो है पूरा देखेंगे कि हम देखेंगे कि एसए का एक आउटलाइन क्या होना चाहिए, अगर नॉन फिलोसफिकल टॉपिक्स हैं तो हम उसमें कैसे प्रोसीड कर सकते हैं, हमें इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन किस किस तरीके से हम लिख सकते हैं और मेन बॉडी को लिखने के, इंट्रोडक्शन को लिखने के, कंक्लूजन को लिखने के क्या क्या अलग अलग तरीके होते हैं ये हम देखेंगे। और उसके बाद फिर हम जब फिलोसफिकल टॉपिक्स पर जाएंगे तो वहां पर देखेंगे कि हम कोई भी जो फिलोसफिकल टॉपिक है उसको हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि जो भी नॉन फिलोसफिकल टॉपिक्स हैं वो किसी ना किसी ब्रॉड थीम के ऊपर आते हैं, या तो वुमेन के ऊपर आएगा, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, या हेल्थ के ऊपर, या एजुकेशन के ऊपर, या एनवायरमेंट के ऊपर, या साइंस एंड टेक के ऊपर, ओके, या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर, या फिर जो है सिविलाइजेशन के ऊपर। तो इस पे आप जो है ब्रॉड थीम्स आप अपनी प्रिपेयर कर सकते हैं, पर जो फिलोसफिकल टॉपिक्स हैं उनको आप केवल प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल तौर पर। और एक अपने दिमाग में सोच सकते हैं कि अगर कोई भी फिलोसफिकल टॉपिक आएगा तो मैं उसको कैसे अप्रोच करूंगा, क्योंकि उसमें कोई आप ब्रॉड थीम प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि वो कोई भी एक पर्टिकुलर जो है कोट किसी भी राइटर की या किसी भी जो है ग्रेट पर्सनैलिटी की कोई भी वो कोट जो है उसके अंदर डाल देंगे, ठीक है, जैसे कि वो डाल देंगे कि लाइट इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ द ट्रैंक्विल सेल्फ। ओके, तो ये इसके अंदर आप जो है प्रिपेयर नहीं कर सकते पहले से, इस पे आप केवल सोच सकते हैं कि अगर फिलोसफिकल टॉपिक आ गया तो उसको आप कैसे अप्रोच करेंगे, तो वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो अब यूपीएससी और क्या कहता है कि द कैंडिडेट विल बी एक्सपेक्टेड टू कीप क्लोजली टू द सब्जेक्ट ऑफ द एस्से, टू अरेंज देयर आइडियाज इन ऑर्डरली फैशन एंड टू राइट कंसाइसली। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें अब ये दिया हुआ है कि क्रेडिट विल बी गिवन फॉर इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन। ओके, तो इसमें क्या हुआ है कि हमें जो है अपने आइडियाज को एक ऑर्डरली फैशन में अरेंज करना है और कंसाइसली हमें जो है लिखना है, और
हमें जो है सब्जेक्ट के भी क्लोज रहना है। ऐसा नहीं है कि हम जो है कंसाइसली तो लिख रहे हैं और अपने आइडियाज को भी हम ऑर्डरली फैशन में अरेंज कर रहे हैं, पर हम जो हमारी डिमांड है क्वेश्चन की, जो हमसे पूछा गया ऐसे के टॉपिक के अंदर, हम उसके अलावा ही कुछ और लिखने लग गए। हमें ऐसा भी नहीं करना, ठीक है। और यहाँ पर दिया है कि क्रेडिट विल बी गिवन फॉर इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अगर आप इफेक्टिव तरीके से अपनी बात को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं और एग्जैक्ट तरीके से अपनी बात को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो उसके जो है आपको क्रेडिट दिया जाएगा, उससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये बेसिकली क्यों होता है, ऐसे का एग्जाम क्यों होता है? क्योंकि जब आप आईएएस या आईपीएस या कोई भी दूसरी सर्विसेज में जाएंगे, तो वहां पर आपको डेली बेसिस पर बहुत ज्यादा नोट्स लिखने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा कमेंट्स लिखने पड़ेंगे, फाइल्स के ऊपर अपनी नोटिस देनी पड़ेंगी। तो अगर आप उसको बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, इफेक्टिव और एग्जैक्ट एक्सप्रेशन में आप कर सकते हैं कि नहीं, यही यूपीएससी एसए के पेपर से जो चेक कर रहा है। क्योंकि आपकी जो नॉलेज है वो तो जीएस 1 2 3 पेपर से और ऑप्शनल से चेक कर चुका है, पर आपकी जो राइटिंग स्किल्स कितना इफेक्टिव तरीके से, कितना एग्जैक्ट तरीके से अपनी बात को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, ठीक है, ये देखने के लिए यूपीएससी जो है ऐसे पेपर का यूज करता है, ठीक है। और जो कमेटी बनी थी जिसने ये ऐसे पेपर को रिकमेंड किया था, उसका भी बेसिक जो है एम यही था, उसने भी बेसिक रिकमेंडेशन यही दी थी कि जो कैंडिडेट्स हैं उनका इफेक्टिव और एग्जैक्ट एक्सप्रेशन, उनकी स्किल्स कैसी हैं, ये चेक करने के लिए ही ऐसे पेपर को ऑन द फर्स्ट नोट इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। अब देख लेते हैं कि कुछ मिसकंसेप्शंस क्या हैं अबाउट द एसए एग्जाम, सब मिसकंसेप्शंस अबाउट द एसए एग्जाम। तो essay paper carries the same marks as any GS paper, yet it does not get the equivalent attention that it deserves from aspirants, first timers and experienced aspirants alike। तो इसमें देखते हैं कि जो है मार्क्स तो 125 ही है, ठीक है, जितने जो है बाकी 125 नंबर का एक ऐसे लिखना होता है, 250 मार्क्स ही है टोटल, तो ठीक है। तो पर ये जीएस के अंदर भी इतने ही मार्क्स के पेपर्स होते हैं, पर जितनी अटेंशन कैंडिडेट जीएस के पेपर्स को देते हैं, जितना उसके बारे में पढ़ते हैं, उतनी अटेंशन वो एसए के पेपर को नहीं, ऐसे पेपर को नहीं देते। तो इससे उनको जो है नुकसान होता है, क्योंकि कम टाइम के अंदर ऐसे में आप जो है बहुत ज्यादा स्कोर कर सकते हैं एज कम्पेयर टू द जीएस पेपर। फॉर एग्जाम्पल अगर इकोनॉमी है तो उसमें आपको बहुत ज्यादा जो है डिटेल में पढ़ाई करनी पड़ेगी, और तब भी आप जो है उसके अंदर एवरेज 100 से लेके 120 के बीच में एवरेज मार्क्स ही आप स्कोर कर सकते हैं। पर अगर आपने एसए के अंदर ही इतनी मेहनत कर ली, तो इसी जो है मेहनत में और उससे कम मेहनत के अंदर आप 140 150 इजीली स्कोर कर सकते हैं, और उससे आपकी जो रैंक है वो बहुत ज्यादा जो है बूस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो तब देखते हैं कि कैंडिडेट्स बिलीव दैट सिंस दे हैव ऑलरेडी स्टडीड एट 10 for the GS papers it would be sufficient to write a good essay। तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है, ठीक है। आप जीएस के लिए कितना ही पढ़ लें, पर आपको एसए के लिए अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि यूपीएससी जो है एसए के एग्जाम के लिए, एसए के पेपर के लिए आपसे कुछ अलग डिमांड्स रख रहा है। वो केवल आपकी नॉलेज को चेक नहीं कर रहे हैं एसए के एग्जाम के, वो ये देख रहे हैं कि आपकी राइटिंग स्किल्स कैसी हैं, आप कितना इफेक्टिव और एफिशिएंट तौर पर, कितना कोहेरेंस के साथ, ठीक है, और कितना जो है फ्लो के साथ अपनी बात को आप एक्सप्रेस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। फिर देखते हैं कि दिस इज अ मिसकैलकुलेशन, knowledge from GS papers is necessary but not sufficient to score well in the essay paper, ठीक है। तो हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं। अब देख लेते हैं few tips to score well in the essay exam। तो सबसे पहले है कि मास्टर जीएस टॉपिक्स। जीएस टॉपिक्स तो आपको जो है मास्टर करना ही है, क्योंकि जो एक सेक्शन है वो पूरा जीएस के टॉपिक्स पर ही बेस्ड रहेगा। वुमेन एम्पावरमेंट का उस पर ऐसे आ सकता है, हिस्टोरिकल कोई ऐसे आ सकता है, इकोनॉमिक कोई ऐसे आ सकता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, बिग डाटा एनालिटिक्स हो गया, या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, या फिर क्लाइमेट चेंज हो गया, ठीक है, और या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस हो गए, आर्ट एंड कल्चर हो गया, पॉलिटिकल कोई टॉपिक हो गया। तो अगर इन सब पे आपको अच्छा ऐसे एक लिखना है, तो आपके जो जीएस टॉपिक्स हैं वो आपके अच्छी तरह प्रिपेयर होने चाहिए, ठीक है। द कोर कंटेंट ऑफ योर एसे विल कम फ्रॉम योर जीएस प्रिपरेशन ओनली। फॉर एग्जांपल, टू राइट एन एसे ऑन अ टॉपिक लाइक नैम, non-alignment movement and its relevance, you need to have a solid grip on India's foreign policy, how it has evolved, what its core tenets are and what major treaties we have signed। तो जो है अगर इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर कोई आपको ऐसे लिखना है, तो इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशंस इंडिपेंडेंस के बाद से अब तक कैसे इवॉल्व हुए हैं, इंडिया ने अलग अलग कंट्रीज के साथ क्या क्या इंटरनेशनल रिलेशंस को डेवलप किया है, कौन कौन सी ट्रीटीज को इंडिया ने साइन किया है, और उन ट्रीटीज को साइन करने से इंडिया को क्या जो है फायदा हुआ है, ये सब चीजें आपको जो है पता होनी चाहिए। और इनको पता करने के लिए आपको जो आपके जीएस के टॉपिक्स हैं उनको अच्छी तरह मास्टर करना ही पड़ेगा, वो तो एक प्री रिक्विजिट है, ठीक है। वही चीज यहाँ पे दी थी कि द नॉलेज फ्रॉम द जीएस पेपर्स इज नेसेसरी, वो जरूरी तो है पर वो सफिशिएंट नहीं है, वो काफी नहीं है, ठीक है। उसके अलावा भी आपको
काफी चीजें करनी है अगर आपको एसए के अंदर अच्छा स्कोर करना है, वरना अगर जीएस के पेपर में ही नॉलेज अपनी स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो आप जो है फ्लो, कोहेरेंस और इफेक्टिव और एग्जैक्ट एक्सप्रेशन जो यूपीएससी आपसे मांग रहा है वो आप प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, और उससे फिर आपके जो मार्क्स है वो एवरेज ही रह जाएंगे एसए के अंदर, ठीक है। तो आपके जो है वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स नहीं हो पाएंगे, और उससे आपकी जो रैंक है हो सकता है आपका जो है मेरिट के अंदर नाम आ जाए, पर जो आपकी जो सर्विसेज है वो बहुत ज्यादा नीचे चल जाएंगी, और जो है एक एक मार्क्स का बहुत ज्यादा फर्क हो रहा है। अब 2019 की आप मार्कशीट देख लीजिए, केवल एक मार्क्स के ऊपर जो है रैंक 10-10 रैंक नीचे जा रहा है, केवल एक मार्क्स के ऊपर कैंडिडेट 10 रैंक से जो है 20वीं रैंक पर जा रहा है, ठीक है, 100 रैंक से 110 रैंक पर जा रहा है, केवल एक मार्क्स कम होने की वजह से कोई एक पर्टिकुलर कैंडिडेट। तो इसीलिए बहुत ज्यादा जो है रोल हो गया है एसए के पेपर्स का और ऑप्शनल के पेपर का, ठीक है। अब देख लेते हैं कि विदाउट सच नॉलेज एनी एसए यू विल राइट विल साउंड शैलो एंड अनइम्प्रेसिव, ये तो बात है ही, ठीक है। देयरफॉर इट शुड बी क्लियर दैट बीइंग गुड एट जीएस सब्जेक्ट जनरल स्टडीज is a necessary prerequisite for writing good essays. Along with this core knowledge, other components of essays such as anecdotes, quotes, good command over language provides a backbone in making your essay persuasive. Therefore, your GS preparation indirectly helps you in your essay preparation. ठीक है, उसके साथ साथ जो है anecdotes अगर आपने तैयार कर रखे हैं, quotes तैयार कर रखे हैं, और अगर आपकी लैंग्वेज के ऊपर थोड़ी अच्छी कमांड है तो वो ओवरऑल बेनिफिट ही देता है आपको एसए के पेपर के अंदर। Now, however, as mentioned above, it does not suffice to just prepare for GS papers and to expect that a grade you will get a great score in the essay। तो ये तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। There are other aspects mentioned below that are equally important. अब है develop a hobby of reading non-fiction books. Reading non-fiction books to develop a mature thought process। ठीक है, आपको सोचने की जो आपकी क्षमता है वो बढ़ेगी, आपको चीजों को आप किस तरीके से देखते हैं वो आपकी जो है प्रोसेस, चीजों को देखने की, सिचुएशंस को देखने की, वो आपकी जो है एनहांस होगी, ठीक है, वो ज्यादा और ज्यादा मैच्योर्ड होगी। अपार्ट फ्रॉम इम्पार्टिंग नॉलेज दे विल आल्सो फैमिलाइज यू विद गुड फिगर्स ऑफ स्पीच, आर्ट ऑफ ऑगमेंटेशन, पावरफुल रियोट्रिक एंड unique content. For example, in an essay on artificial intelligence, ideas can be taken from Yuval Harari's Homo Deus to argue that AI is an imminent threat to humanity. तो अगर आप ऐसे आइडियाज लेंगे तो फिर आपके जो ऐसे है उसके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा उसका एग्जामिनर के ऊपर, ठीक है, और आपको फिर अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस एनहांस हो जाएंगे। और इफ यू रीड अ बुक लाइक व्हाई नेशंस फेल यू विल अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ इनोवेशन, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम्स इन प्रोपेलिंग ए नेशन फॉरवर्ड। So apart from UPSC related material, develop the hobby of reading non-fiction books. It is not to suggest that you should read one non-fiction book per topic to get good scores in essay, but reading them occasionally in your free time will benefit you in the long run even after you become a civil servant. Okay, फिर है collect information from specific magazine issues, जैसे कि योजना हो गई, कुरुक्षेत्र हो गई, उसमें बहुत ज्यादा अच्छे आर्टिकल्स आते हैं, स्पेशली एडिटोरियल जो उसमें एडिटर के जो आर्टिकल्स आते हैं उनके अंदर आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को उसको आप यूज कर सकते हैं अपने एसेज के अंदर, ठीक है, ब्रॉड थीम्स के लिए, जैसे कि हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर, इकोनॉमिक टॉपिक्स के ऊपर, डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के टॉपिक्स के ऊपर बहुत ज्यादा कई सारे अच्छे एसेज और अच्छे जो है उसके अंदर एडिटोरियल्स आते हैं, जिसके अंदर आप स्पेशली इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन्स को आप वहां से टेम्पलेट देख सकते हैं कि वहां पे कितने अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखे हुए हैं, और उनको फिर आप अपने एसेज के अंदर जो है सिमुलेट कर सकते हैं, और इससे आपका जो स्कोर है वो एनहांस होने की चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। स्पेसिफिक इश्यूज ऑफ योजना आर यूजफुल इन फेवरिंग फॉर टॉपिक्स लाइक ट्राइबल डेवलपमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सेट्रा। These magazines will also help you to know the positives and criticisms of government policies in that sector. Apart from the magazines, economic survey is a rich resource for latest statistics and schemes in a particular sector. Make a note of these in a separate notebook and revise them from time to time. फिर रीड न्यूज़पेपर्स डेली, ये तो प्रीरिक्विजिट है ही, ठीक है। द हिंदू या फिर द इंडियन एक्सप्रेस आपको पढ़ना ही है करंट अफेयर्स के लिए भी, और जो एडिटोरियल्स आते हैं उसके अंदर भी आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से उन्होंने, एडिटोरियल भी एक शॉर्ट ऐसे ही है, ठीक है, उसके अंदर भी उन्होंने जो है इंट्रोडक्शन होता है, उनका मेन बॉडी होती है और उनका कंक्लूजन होता है, तो उससे भी आप आइडिया ले सकते हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर अच्छे ऐसे का
जो है इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और एसे आपको किस तरीके से लिखना है, ठीक है। रेगुलर न्यूज़पेपर रीडिंग हेल्प्स इन टू वेज। वन, योर लैंग्वेज एंड वोकैबुलरी विल इंप्रूव योर ओवर टाइम। Second, newspapers contain many good real life stories, anecdotes, quotes which can be used in the essay paper। तो आप जो है एक तो एडिटोरियल्स पढ़ सकते हैं न्यूज़पेपर्स के, और दूसरे आप जो है अच्छी कोई रियल लाइफ स्टोरीज आई हैं, ठीक है, ग्रेट पर्सनैलिटीज के बारे में, या फिर कोई एनेक्डोट आया है रियल लाइफ कोई उसके अंदर डिस्क्रिप्शन आया है एनेक्डोट, ठीक है, और कोई कोट आई है, तो उसको आप जो है एक सेपरेट नोटबुक में या फिर किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाइक एवर नोट, you can note that and you can revise them and use that particular information while writing your essay, and it will boost your marks to a great extent। Okay, these small things only which you do on a daily basis, ठीक है, these only help you at a subconscious level to score good in the essay exam। Okay, when you come across these in papers, note them in a book or on your computer। If you are reading online and you find something useful, a quote, phrase or a story, use Evernote or some online note making tool to file it in the essay section and revise before the exam। Okay, use this notebook for noting down the latest statistics and findings of important reports in sectors such as health, economy, education, ठीक है, जुडिशियरी एक्सेट्रा। फिर प्रिपेयर ए रफ ड्राफ्ट ऑफ मेजर ऐसे थीम्स, जो मेजर ऐसे थीम्स है जैसे वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, ट्राइबल इश्यूज हो गए, है ना, इन सब के ऊपर एक आप रफ थीम बना लीजिए, क्योंकि एक ना एक टॉपिक इनमें से पूछ लिया जाएगा किसी ना किसी एक सेक्शन के अंदर, ठीक है, और एक टॉपिक इस पर आना पक्का होता है, ठीक है। वो आप पूरा एनालिसिस कर सकते हैं पिछले 5 साल के यूपीएससी मेंस के एग्जाम्स का, ऐसे पेपर्स का, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि अगले साल जो है, जिस साल आप अटेम्प्ट कर रहे हैं पेपर मेंस, आप जिस साल अटेम्प्ट कर रहे हैं उस साल कौन से कुछ ऐसे 5, 6, 10 पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जिनके आने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा है, तो उन पर जो है आप एक रफ ड्राफ्ट पहले ही से ही प्रिपेयर कर लीजिए। इससे आपके पास इंफॉर्मेशन की जो है कमी नहीं होगी, केवल आपको उस इंफॉर्मेशन को, जो टॉपिक उसने पूछा है ऐसे के अंदर, ठीक है, उस ऐसे के टॉपिक के हिसाब से आपको उस इंफॉर्मेशन को केवल जो है अडेप्ट करना होगा, और आपको फ्लो और कोहेरेंस पे काम करना पड़ेगा केवल, ठीक है। आपको इंफॉर्मेशन के लिए बहुत ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करनी पड़ेगी, केवल आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग इसलिए करनी पड़ेगी कि कैसे आप उस इंफॉर्मेशन को, जो आपने पहले से अपने दिमाग के अंदर स्टोर करके रखी हुई है, उस इंफॉर्मेशन को आप किस ऑर्डर में और किस तरीके से फ्लो के साथ आप एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। इसी पे आपको जो है एग्जाम के अंदर काम करना पड़ेगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग आपको केवल इसी पर करनी पड़ेगी, और ये प्रोसेस करने से बहुत ज्यादा चीज आसान हो जाती है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के अंदर केवल जाके अगर कोई नया टॉपिक दिखा, उस पर अगर आपके पास इंफॉर्मेशन पहले से तैयार नहीं है, तो उस पर जो है ऐसे लिखना, एक क्वालिटी ऐसे लिखना, ऐसे तो आप लिख देंगे, पर एक क्वालिटी ऐसे लिखना जिससे जो है आपको वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स जो है मिल सके उसके अंदर, वो लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अगर आपने पहले से जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग करके और पहले से जो है रफ ड्राफ्ट नहीं तैयार कर रखे हैं। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। A useful exercise in your essay preparation is to pore over the previous year essays and understand major themes which are asked in the paper। You will find common themes such as education, agriculture, women empowerment, science and tech, innovation, foreign policy, security, health, economic reforms, etc. For these frequently asked topics, prepare rough essay drafts। This draft need not necessarily be a complete essay, but an outline in which you jot down the major points and roughly think of what you will write in the introduction, main body and conclusion, ठीक है। तो आपको ये एक्सरसाइज करने से बहुत ज्यादा फायदा होगा। This exercise will help immensely in getting rid of the writer's block and developing the habit of brainstorming and preparing a quick framework for a topic। तो ये चीज हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो इससे आपको किस तरीके से फायदा हो सकता है, ठीक है। With have practice writing full length essays। You had not learned how to write good essays by merely reading this, ठीक है। You had get better only when you actually write them। Write as many essays as you can and then analyze from yourself as to what you have missed। Try to implement the ideas that you find here in the useful in the mocks। Okay, तो आपको मुझे फुल लेंथ टेस्ट भी आपको देने हैं। अब देते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ द एसे कैसा होना चाहिए, व्हाई द इंट्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है। द मूवी इंग्लोरियस बास्टर्ड्स opens with a glorious scene। The short doesn't reveal much about the story or the characters, but it's so engrossing that once you watch it, you are hooked।
That scene accurately captures the importance of a great introduction to a film. Introduction to an essay is like an opening scene to a movie. It should start strong, give a brief idea of what's coming ahead, and make your audience wanting for more. A well-crafted introduction creates that urgency and curiosity in the minds of the readers, and captivating them into reading the rest of the write-up. A splendid introduction is therefore a prerequisite for a splendid essay. What should be an effective introduction of the UPSC look like? ठीक है, an effective introduction to the UPSC essay should be around 120 to 150 words and should meet three basic conditions. वो तीन basic conditions क्या meet करनी चाहिए introduction को? It must generate interest in the reader. It must be relevant to the question. It must be concise. Now the question is, how do we meet these conditions and make the essay impactful? So different ways to write an effective introduction in the UPSC exam. तो आपको एक story जो है उसके अंदर बता सकते हैं, ठीक है? It's a fundamental psychological principle that humans are fascinated by stories. कोई भी अगर एक story को पढ़ेगा तो उसको जो है उसके अंदर और ज्यादा इंटरेस्ट उस टॉपिक के अंदर बढ़ेगा, ठीक है? तो क्रिएट कैरेक्टर्स, give them fictitious names and weave a narrative relevant to the question asked, ठीक है? For an essay on healthcare reform in India, you can create a character from a rural village who is neglected by the public health primary health institution, misguided by primary health center, misguided by the private clinics, and fled by the local medical store. A short story on it powerfully brings out the problems of our public health sector. Similarly, for the topics such as 50 golds in Olympics, can this be a reality for India? You can introduce your essay with a short narration of India winning 50 Olympic gold medals in 2032. You can then transition to the main body discussing how to make that a reality. So with topics where you feel that a story can accurately bring out the core theme of your essay, go ahead with this method. Just be mindful of keeping your story short and relevant to the topic of the essay. फिर टॉपिक अब देख लेते हैं, साइबर स्पेस इज द न्यू बैटलफील्ड. इंट्रोडक्शन, अब इसका कैसे लिख सकते हैं स्टोरी के तौर पे? इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, इट इज अ फाइन विंटर मॉर्निंग इन 2025 as commuters travel to work, the metro rail crashes to a grinding halt. Concurrently, planes in the airspace lose communication with the ground control. Banks report breach of confidential data from their servers. Government websites are hacked with threatening messages splashed all across the screens. The energy and nuclear power plants control systems are infected with strange viruses. In 30 minutes, the country's critical infrastructure collapses, and within an hour, it becomes clear that the country has become a victim of a coordinated cyber attack. Cyber war. This scary scenario, confined earlier to the sci-fi movies, is now a potential reality. With increasing networking and interconnectedness, cyberspace is emerging as the new arena for warfare in the 21st century. How India prepares for this combat is a critical challenge of our times. तो एक जो है आपने स्टोरी के जो है तौर पर आपने एक्सप्लेन कर दिया कि आपका जो है आप साइबर स्पेस इज द न्यू बैटलफील्ड, इस टॉपिक को आप कैसे प्रोसीड करेंगे, ठीक है? दूसरा आपका तरीका है नरेट एंड एनेक्डोट, ठीक है? एनेक्डोट भी स्टोरी ही होती है पर वो रियल लाइफ एक स्टोरी होती है, रियल लाइफ इंसिडेंट होता है, ठीक है? राइट अबाउट एन इंसिडेंट और स्टोरी यू हैव रेड इन द न्यूज़पेपर्स और बुक्स, और राइट अ हिस्टोरिकल एनेक्डोट रिलेटेड टू द क्वेश्चन. This is merely a variant of the fictitious story mentioned in the first category. The only difference is that here it's a real life incident. Care must be taken to ensure that you pick an incident that's widely known. Do not write about an obscure event that the examiner might not have heard of. For instance, if there is a question on women empowerment or gender justice, one can start with the Nirbhaya episode or PV Sindhu's rise to the top of badminton. टॉपिक अब देख लेते हैं, be the change you wish to see. अब इसका इंट्रोडक्शन एनेक्डोट के तौर पर आप कैसे लिख सकते हैं? It was 1893. A bright young lawyer was traveling first class on a train in the British colony of South Africa. During the journey, a white man objected to his presence in the compartment despite the lawyer possessing a valid ticket. The white man insisted that colored men like him were supposed to ride in the third class and not in the first class. When the lawyer refused to give up his seat, he was thrown off the train. Insulted at this discrimination, the young man resolved to fight injustice with truth and non-violence. He went on to become the force of change he wished to see in the world. He was Mahatma Gandhi. फिर है दूसरा, mentioning a startling fact or a statistic.
state effect that pulls the reader out of comfort zone and builds curiosity about the topic. टॉपिक अब देख लेते हैं, ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज फॉर ए क्लाइमेट चेंज रेजिलियंट इंडिया। इसका इंट्रोडक्शन कैसे दे सकते हैं? अराउंड 1 मिलियन प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन with alarming implications for human survival. According to a United Nations report, our natural resources are getting depleted, rains are getting erratic, and the air is turning toxic. The scientific consensus is clear about the cause behind this dangerous trend. Carbon emissions from human activities are irrevocably damaging the environment at a rapid pace. It's not climate change anymore. It's a climate emergency. This poses an imminent danger to the world, especially to the developing countries like India, which have to balance the need for rapid economic growth with reducing carbon emissions. To tackle this challenge and make India climate change resilient, the country requires imagination and innovation, स्पेशली इन ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज। अब दूसरा आप इंट्रोडक्शन कैसे दे सकते हैं? आप कोई क्वेश्चन पोज कर सकते हैं, ठीक है, a series of rhetorical questions that encapsulate what you will discuss next. These questions act as a thought-provoking tools and engage the attention of the reader by adding flair to your writing. टॉपिक है a good life is one held by compassion and guided by humanity. तो इसका इंट्रोडक्शन आप कैसे दे सकते हैं? What is a good life? This is a fundamental question that captured the human's imagination for eternity, and we often hear many answers. Is it with enormous wealth, power, and status, or is it one filled with compassion and empathy for fellow living beings? From Mahatma to Mandela, Lincoln to Luther King, if there is one common thread that binds these great lives, it is that they led a life full of compassion and love for fellow humans. From the lives of these great personalities who have left a remarkable legacy, what can we learn? How do we live a life full of purpose and meaning? How can we inculcate these learnings to become better individuals, build better societies, and shape great nations? Let us explore these fundamental questions. ठीक है, तो दूसरा आप कर सकते हैं, begin with a quote or a poem. ठीक है, famous poem or a quote is a time-tested way to start the essay. After you write the quote, the rest of the introduction must be an elaboration of the quote, explaining its significance and relevance to the question. टॉपिक है, कैन कैपिटलिज्म ब्रिंग इंक्लूसिव ग्रोथ? इंट्रोडक्शन, इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness, it was the season of light, it was the season of darkness. So wrote Charles Dickens during the Industrial Revolution. These lines describe the paradox of those times, incredible riches coexisting with unimaginable poverty. One would be inclined to form a similar opinion of modern day capitalism. Advocates of capitalism claim that it has created immense global wealth for everyone and accelerated our economic progress. Yet critics point out that it is deeply biased towards a privileged few, leading to a fundamental debate. Can capitalism be beneficial to everyone? Is capitalism a rising tide that lifts all boats, or is it a rigged system of the rich, by the rich, and for the rich? The endeavor of this essay is to carefully examine these claims and provide an answer to the debate. We have provided context to the essay topic. In this method, you write about the broad circumstances surrounding the issue. It can include any of these things: a recent legislation, a newly introduced government scheme, or a recurring current affairs topic. Writing about the topic's context and its background information reads like a newspaper report, and it might be something the reader already knows. So on this front, it fails the first test of an effective introduction to generate interest or curiosity. ठीक है, तो use this method only when you cannot come up with other methods discussed above. टॉपिक को देख लेते हैं, जैसे आधार एंड द राइट टू प्राइवेसी। इस पे आप कैसे ले सकते हैं इंट्रोडक्शन? द रीसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन जस्टिस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया case brought into sharp focus many important issues pertaining to Aadhaar and its potential conflict with the privacy rights of the citizens. The apex court ruled that the right to privacy is a fundamental right and at the same time upheld the constitutional validity of the Aadhaar Act. But critics of the Aadhaar scheme point out that the empowering government to collect and store sensitive data of citizens such as biometrics is fraught with many risks and is prone to abuse of power. In this context, it is becoming increasingly important to understand the Aadhaar scheme, its importance, drawbacks, and the potential solutions to balance the need of Aadhaar with the requirement to protect the fundamental right to privacy of the citizens. Let us examine each of these issues in detail. ठीक है,
फिर है आपका डिफाइन द टर्म्स ऑफ द एसे. दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. इन दिस मेथड ब्रेक डाउन द क्वेश्चंस इन पार्ट and define the meaning of each term. We use this technique extensively in GS papers. However, it is not the right approach for the essay. Remember that the essay is not meant to be written like a GS paper, since the essay, apart from content, is also graded for language, flow, coherence, and effective argumentation. Introducing your essay like a GS answer feels bland and cliche, lacking in warmth or a human element. So it's recommended that aspirants desist from using this type of introduction. ठीक है, टॉपिक है मान लीजिए फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. आर वी प्रिपेयर्ड फॉर इट? तो द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को डिफाइन कर दिया. इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है क्या? द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन refers to the collection of breakthrough technologies that have emerged in recent times. They include the Internet of Things, artificial intelligence, robotics, and advancements in biotechnology. The Internet of Things helps us to connect with material objects. AI is building brains that can now have the ability to. Latest developments in biotechnologies have given us the power to edit genes and engineer babies. All these technologies have the potential to fundamentally change the way we live our lives, but not always for the better. These technologies come with considerable risks and therefore require careful analysis and nuanced usage. ठीक है, फिर थीसिस स्टेटमेंट देख लेते हैं. थीसिस स्टेटमेंट क्या होता है? A thesis statement is a single sentence near the end of your introduction that presents your stand on the given topic. कि आप आगे उस टॉपिक के ऊपर इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आप उस टॉपिक के ऊपर कैसे प्रोसीड करेंगे, आपके एस्से के अंदर उस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगी, ये आप थीसिस स्टेटमेंट के अंदर दे सकते हैं. ठीक है. The rest of the essay is about evidence and reasoning to persuade the reader of the logic of your claim. It is a roadmap for your response, conveying to the reader what to expect from the rest of the essay. अब देख लेते हैं थीसिस स्टेटमेंट आप कैसे लिख सकते हैं. ठीक है, टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन, ए कर्स और ए ब्लेसिंग. तो इसमें आप थीसिस स्टेटमेंट लिख सकते हैं. इन दिस essay we will discuss the history, meaning and the impact of globalization on various facets of humanity. We will then focus on the reasons which drove this phenomenon and the impact it has had. Finally, we will discuss the solutions to overcome the ill effects of globalization to make it prosperous for all. In your essay, if your essay is fluid with each argument flowing into the next effortlessly, then there is no need to write a thesis statement. But if you are new to essay writing and want to make things clear upfront without leaving anything to guesswork, then state it. As you write more essays and become better at flow and structure, focus on subheadings and coherence between paragraphs to make the thesis statement unnecessary. फिर देख लेते हैं मेन बॉडी ऑफ द एसे आप कैसे लिख सकते हैं. Right, with a good introduction, you have captured the interest of the reader. Continuing from there, we must now develop the essay in the main body, in which we explain, interpret, describe, or argue the topic at hand. Such elaborate narration requires neat order and proper structure. Moreover, the essay must also have a smooth flow from one paragraph to the next and a unified coherence. ठीक है, अब ये फ्लो और कोहेरेंस क्या है इसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे वीडियो में. ठीक है, तो how you can achieve flow and coherence is dealt in detail in the later parts of the video. For now, let's dive into the methods you can use to structure your main body. This will help you become competent at developing new essay topics too. सबसे पहले आप कर सकते हैं टेम्पोरल अप्रोच. ठीक है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. In this method, you develop the main body in a way that captures the evolution of the subject from its origins to its current status and then to the future roadmap. This method is suitable for questions that are very broad in their scope. Below are such topics which are asked in the UPSC exam previously. The language problem in India, its past, present and prospects. ठीक है, water disputes between states in federal India. The global order, political and economic. For the last example, you can structure your main body as below. Begin your main body by giving the historical perspective of the early political and economic order. You can briefly talk about the early hunter-gatherer society and then describe its evolution into Neolithic agricultural societies. From then on to the stage of empires to the rise of nations along with the brief analysis. Next, you move to the present global political and economic order with reasoned analysis consisting of issues, challenges and their causes with a specific emphasis on India. Finally, you can conclude with the global order of tomorrow
with your suggestions as to what should be done. You can also include the role India has to play in the new world order of the 21st century. ठीक है, जो आपका हो गया टेम्पोरल एनालिसिस आप कैसे कर सकते हैं, टेम्पोरल अप्रोच आप कैसे कर सकते हैं मेन बॉडी लिखते टाइम. ठीक है, फिर है डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ अप्रोच. ठीक है, इंडिविजुअल, family, workplace, society, nation, and the world. Some topics are most suited to be elaborated under various facets of life. For example, consider a topic like with great power comes great responsibility. So this essay can be elaborated under how different walks of life how among different walks of life powerful entities need to act responsibly, or else if this power is misused we face terrible consequences. You can also include analysis of it as to why and how power gets abused and how we can build responsible individuals, societies and nations. ठीक है, फिर problem and solution approach. Under this method you discuss the concept, its history and current status briefly. Then you can mention its benefits, problems and end with it with solutions. ठीक है, useful for topics that are generally beneficial but have some negative effects. Think of globalization, economic reform, judicial activism, public-private partnerships. तो इसमें आप इनकी प्रॉब्लम्स दे सकते हैं और इनके फिर सॉल्यूशंस दे सकते हैं इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. ठीक है, इससे भी इस तरीके से भी आप अपनी मेन बॉडी को अप्रोच कर सकते हैं. फिर है डिबेटिंग फॉर एंड अगेंस्ट. This method is best suited for essay topics that are posed as debatable questions. Science and religion, are they compatible? ठीक है, और should we abolish death penalty? Can capitalism bring inclusive growth? तो इसमें आप फॉर में इसके फेवर में कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं और इसके अगेंस्ट में कुछ पॉइंट लिख सकते हैं. फिर अपना जो है स्टैंड आप क्लियर कर सकते हैं लास्ट में. ठीक है, कि आप उसके फॉर में हैं या फिर आप उसके अगेंस्ट में हैं. ठीक है, फिर मल्टीनेशनल कंपनीज, सेवियर्स और sabotiers. In the main body you briefly discuss the concept, history and definition, and then divide the essay into two broad sections that have arguments for and against the statement. In conclusion, you can present your stand on the issue in clear terms. फिर sectoral approach, social, political, economical, administrative, international, environmental, historical, scientific, security, legal. ठीक है, here you analyze a statement across various sectors either to amplify or elaborate on the topic. City useful when the question statement is philosophical in nature, representing a generally accepted truth. ठीक है, तो philosophical topics के अंदर हम ये elaboration वाली जो टेक्निक है sectoral approach ये हम यूज करेंगे. ठीक है, अभी देखेंगे आगे, हम जब आगे वीडियो में बढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि philosophical essays के अंदर हम कैसे sectoral approach को यूज कर सकते हैं और अपने जो है ऐसे ही क्वालिटी को ज्यादा एनहांस कर सकते हैं. ठीक है, तो दिस इज अ स्टैंडर्ड style that most aspirants use to develop their arguments. You take a statement and analyze it across various sectors and give your perspective on it. Example, best for an individual is not necessarily best for the society. So political, how vote buying and rigging may be beneficial for an unscrupulous politician but has devastating consequences for a democratic society. Constitutional, personal liberty is best for an individual but unchecked freedom for an individual is not best for a society. For example, the Constitution under Article 19 imposes reasonable restrictions on speech that incites violence. Historical, world wars were fought for the selfish interests of a few powerful individuals and ended in catastrophic consequences for humanity. Economic, laissez-faire capitalism is best for wealthy entrepreneurs and privileged people, but it doesn't ensure equality or social justice for everyone. International, UNSC as it exists is in the best interest of all small set of nations. They get to call the shots and veto a decision, but this isn't helpful for global security as the Syrian crisis shows. Environmental, what has been best for an individual species, humans, is now wreaking havoc with the global climate causing irreparable damage to the planet. फिर subheadings approach. ठीक है, use subheadings to delineate broad sections in the write-up. Ideally not more than 3-4 पर ऐसे 3 से 4 से ज्यादा जो है सबहेडिंग नहीं होनी चाहिए. ठीक है, you may write them in all caps to make them stand out from the rest of the text. Also be innovative in your titles. In an essay on nuclear energy, instead of saying evaluation of nuclear energy, you can write nuclear energy, promise or peril. Also for a section on negative effects of capitalism, write capitalism of the rich, by the rich and for the rich. ठीक है, तो इससे आप एक इनोवेटिव तरीके से सबहेडिंग भी आप यूज कर सकते हैं. ठीक है, मेन बॉडी ऑफ द एसे को डिपिक्ट करने के लिए, उसको लिखने के लिए. फिर डायग्राम्स अप्रोच. Essay is a literary device to explore your writing skill, which is why diagram is not the best tool to convey information. However, for some peculiar topics, a map becomes necessary. For instance, in topics like water disputes in India,
Management of Indian border dispute is a complex task. One can draw a map to illustrate geographical location or distribution. फिर आप कंक्लूजन कैसे लिखना है ऐसे का वो देखते हैं। कंक्लूजन नीड्स टू अकम्प्लिश टू गोल्स, ठीक है, दो गोल्स उसके वो कंक्लूजन अकम्प्लिश करना चाहिए। पहला वन, गिव द रीडर ए कम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू ऑफ द एसे, कि आपने एसे के अंदर अभी तक क्या क्या डिस्कस किया है, ठीक है, इंट्रोडक्शन में आपने क्या, फिर आपने बॉडी के अंदर क्या क्या बोला, वो आपको पूरा एक एसे के अंदर एसे के कंक्लूजन के अंदर 3 से 4 लाइन के अंदर वो पूरा डिपिक्ट करना है, ठीक है। टू, लीव ए फेवरेबल इंप्रेशन ऑन रीडर्स माइंड आफ्टर लॉन्ग आफ्टर ही और शी इनिशियस रीडिंग इट, ठीक है। जब आपने आपके कंक्लूजन को पढ़ लिया और आपके पूरे एसे को उसने पढ़ लिया तो कंक्लूजन पढ़ने के बाद क्या होना चाहिए, उसके रीडर के माइंड के ऊपर एक फेवरेबल इंप्रेशन जो है हो जाना चाहिए, ताकि वो बहुत लंबे टाइम तक आपकी एसे को याद रख सके, ठीक है, और तभी आपको जो है वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स मिलेंगे। टू दैट एंड अ गुड कंक्लूजन हैज टू सेगमेंट्स। द फर्स्ट वन, द कंक्लूजन सेगमेंट, इज a clear, concise summary of the arguments of the essay, refreshing the mind of the reader and bringing a sense of closer to the text, ठीक है। आपने जस्ट समरी दे दी कंक्लूजन पैराग्राफ के अंदर, कंक्लूजन सेगमेंट में आपने अभी तक क्या क्या essay के अंदर डिस्कस किया है, ठीक है, तो उससे जो है रिफ्रेश हो जाएगा माइंड रीडर का कि वो अभी तक आपके essay के अंदर क्या क्या पढ़ चुका है, ठीक है। और फिर है, इफ द टॉपिक रिलेट्स टू अ प्रॉब्लम, a debate or a burning issue, then the conclusion segment must also present solutions and suggestions that will help solve the problem or address the issue at hand. This gives a sense of vision for the future, क्योंकि आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं और आपको प्रॉब्लम्स ही केवल नहीं बतानी है, प्रॉब्लम्स को कोई भी बता देगा, चाय वाला, रिक्शा वाला, प्रॉब्लम्स कोई भी बता देगा, पर उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे आप दे सकते हैं, यही यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है। तो आपको कंक्लूजन के अंदर अगर आप कोई प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं अपने एसे के अंदर, तो उस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करेंगे, उसका जो है क्या बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है आपके हिसाब से, ये भी आपको कंक्लूजन के अंदर डालना ही है, ठीक है, तभी आपको जो है अच्छे मार्क्स मिलेंगे, वरना फिर वही एवरेज मार्क्स पर रह जाएंगे, ठीक है। द सेकंड सेगमेंट, a rhetorical paragraph, is a short eloquent passage that amplifies your position and leaves the reader with a favorable impression। तो थियोरेटिकल पैराग्राफ के अंदर आपको अपना जो है स्टैंड क्लियर करना है, ठीक है, क्वेश्चन क्या है वो क्लियर करनी है। आप देख लेते हैं कंक्लूजन पैराग्राफ कैसे हो सकता है। द कंक्लूजन पैराग्राफ शुड कंसिस्ट ऑफ अबाउट 250 to 300 वर्ड्स टू मेक द ट्रांजिशन फ्रॉम द मेन बॉडी टू द कंक्लूजन क्लियर। बिगिन बाय यूजिंग फ्रेजेस such as in conclusion, in summary, to sum up, in the final analysis of on the whole, all things considered as discussed above, on balance, etc. Then briefly mention the major arguments, problems and pitfalls, context and consequences, significance and solutions related to the topic। Basically a snapshot of your essay, ठीक है, एक समरी आपको छोटी सी, बहुत छोटी सी तरीके से आपको एक समरी दे देनी है कि आपने essay के अंदर क्या क्या डिस्कस किया है, और अगर कोई प्रॉब्लम essay के अंदर डाली है तो उसका सोल्यूशन भी आपको कंक्लूजन के अंदर देना है कंक्लूजन पैराग्राफ में, ठीक है। रिमेंबर टू कीप द टोन फ्यूचरिस्टिक विद एन एम्फेसिस ऑन सॉल्यूशंस। आपको सॉल्यूशंस के ऊपर एम्फेसिस रखना ही है, क्योंकि आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, आपको आपकी जो स्किल्स हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस है, उसका यूज करके आपको सॉल्यूशंस देने हैं, प्रॉब्लम्स ही केवल नहीं बतानी है, वो तो कोई भी बता देगा, ठीक है, पर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है यही आपको फ्यूचर में जो है डिसाइड करना है। तो इसीलिए आपको अभी भी आप ऐसे जब लिख रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम्स देने के साथ साथ कंक्लूजन पैराग्राफ में आपको सॉल्यूशंस भी देने हैं, इफेक्टिव सॉल्यूशंस देने हैं, ठीक है, फ्यूचरिस्टिक सॉल्यूशंस देने हैं, तभी आपको वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स मिल पाएंगे, ठीक है। फिर आप देख लेते हैं कंक्लूजन। मान लीजिए ऐसे टॉपिक है, कैन कैपिटलिज्म ब्रिंग इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है, तो इसका कंक्लूजन पैराग्राफ कैसे हो सकता है। टू सम अप द कंक्लूजन इज क्लियर, कैपिटलिज्म इंडीड हेल्प्स इन क्रिएटिंग वेल्थ बट बाय इटसेल्फ इट कैन नॉट ब्रिंग इंक्लूसिव ग्रोथ। कैपिटलिज्म, इसमें आपने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, ठीक है। कैपिटलिज्म इज लाइक ए पावरफुल एनर्जी, अनडायरेक्टेड एंड अनचेक्ड इट कैन कॉज इमेंस डैमेज। व्हेन व्हाट वी नीड इज ए न्यू काइंड ऑफ कैपिटलिज्म, एन इंक्लूसिव कैपिटलिज्म that has equity and fairness at the heart of it, and we must take urgent measures to ensure it. Firstly, the companies should not see corporate social responsibility as a charity but as part of fulfilling their rightful duty towards the society. CSR projects must be further improved to ensure that companies take up genuine projects that cater to the local needs and have long-term benefits. Secondly, as a society, we must encourage philanthropy. Bill Gates contributed more than $1 billion of his earnings to alleviate suffering in Africa. Warren Buffett donated 85% of his savings to charity. Indian capitalist class must also take such initiatives and stand as a role model for others. Third, a carbon tax must be imposed on every polluting industry. इसमें सॉल्यूशंस भी आप साथ में दे रहे हैं, आपने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि भाई कैपिटलिज्म
जो है कैसे उससे हम इंक्लूसिव ग्रोथ इंश्योर कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने जो है सोल्यूशन दे दिए कि कैसे हम जो है इंक्लूसिव कैपिटलिज्म की तरफ जो हम जा सकते हैं, ठीक है। थर्ड, a carbon tax must be imposed on every polluting industry. Further, companies must bear the complete cost of rehabilitation and resettlement in a specified time limit for every development project that causes displacement of local people. Fourth, the government must further simplify the process of setting up a business. Startup India, Stand Up India, and Mudra Yojana must be strengthened so that we nurture capitalist spirit among the disadvantaged sections of the society. Last, the government must play a predominant role in sectors that are ignored by markets: health, education, rural livelihoods, poverty eradication, and the like. This way, we strike a balance between equity and efficiency, between wealth and welfare. फिर rhetorical paragraph अब क्या होगा? Rhetoric is the art of persuasive speaking or writing. In a traditional sense, it refers to the various figures of speech that orators use to make their speech compelling. In this context, it is construed in a more general sense of persuasive writing through various devices such as a poem, a quote, or an anecdote. ठीक है. The rhetoric segment is around 30 to 50 words. Persuasive writing generates a heightened sense of pitch. Any writing is persuasive to some extent, but rhetorical devices amplify your message and attempt to convince the reader to accept your argument. Now we will discuss some devices that you can use in your conclusion segment. Depending on the type and topic of your essay, choose what you feel is relevant. Also, since there are two essays, choose a different device for each. ठीक है, पहले हम यूज कर सकते हैं पोएम और श्लोक, ठीक है, करने के लिए. This is especially suitable for philosophical essays. Mention specific stanzas of a poem श्लोक that resonate with your essay. जैसे टॉपिक है फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर, प्राइवेसी, ह्यूमन राइट्स, डेवलपमेंट, एजुकेशन, तो उसकी रियोट्रिक एंडिंग देख लेते कैसी होगी. एज रविन्द्रनाथ टैगोर wrote in Gitanjali, where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action into the heaven of freedom. My father, let my country awake. फिर योर विजन, आपका विजन कैसे है, आप क्या विजन जो है रखते हैं उस टॉपिक के ऊपर, ये भी आप रियोट्रिकल पैराग्राफ के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है. नॉर्मल, फ्यूचरिस्टिक, कंक्लूजन, यू डिस्क्राइब द far future when the problem mentioned in topic gets solved and the negatives that we see in society are eliminated. To make it compelling, use catchphrases such as inclusive India or refer to the preamble or directive principles of the constitution or the vision of the makers of modern India. Essay topic: India is a 5 trillion economy. Theoretical ending: achieving a $5 trillion economy is challenging yet possible, but we must ask ourselves to what end. A 5 trillion economy should not be merely about shiny roads or skyscrapers or a superpower status. It must be about making a positive difference to every citizen of the republic. It must be a place where the poor becomes prosperous, women gets equal opportunity, all children irrespective of their birth get to fulfill their potential. This is when we will have truly realized the goal that we set out in the Constitution's preamble of delivering every citizen justice, liberty and equality. और अब आप जो है कोट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है. And with a powerful quote by famous person to amplify what you have argued in your essay. It brings credibility to your stand and makes an emotional connection with the reader to make him or her accept your point of view. It will also linger in the mind of the reader, leading to a positive impression on the essay. ऐसे टॉपिक है जैसे change is the end result of all learning. तो theoretical इसकी ending कैसे हो सकती है कि history has shown us that change is the only constant in life. Without learning and change, we risk stagnation as individuals, as a society, and as a nation. Let us avow to a constant learners. Let us avow to be constant learners and be agents of change, so that we build a better world for everyone. For that to happen, learning should never cease and change must begin with us. As Gandhiji once said, our greatness lies in not so much in changing the world as in changing ourselves. फिर देख लेते हैं echo. If you have begun your essay with a fictitious story or a character, it's nice to end your essay with a reference to that character or story. Such recall or the echo binds the beginning and the end, giving the reader a sense of unity and coherence. Take a look at the example below.
ऐसे टॉपिक है जैसे साइंस एंड टेक इज अ पेनिशिया फॉर सॉल्विंग ह्यूमैनिटीज प्रॉब्लम्स। नारायण ए नेटिव ऑफ, इसका इंट्रोडक्शन कैसे हो सकता है कि नारायण ए नेटिव ऑफ गंजम डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा हैज बीन फार्मिंग सिंस द 90s। बैक देन इट वाज अ डिफिकल्ट एंटरप्राइज। ही नाइदर न्यू मच अबाउट द काइंड ऑफ क्रॉप्स दैट suited his soil nor was he aware of the measures he needed to take to improve soil fertility. He was always at the mercy of pests, rains, and the local traders. And how much life has changed in these two decades. Now he uses a smartphone to get weather updates and scientific advice. ठीक है, uses genetically modified seeds to improve yields and sells his produce via ENAM, an online platform that gives him a profitable price. तो आप स्टोरी का यूज करा और फिर अब आपने जो टेम्पोरल तरीके से बता दिया कि पहले और अभी के एग्रीकल्चर की जो फैसिलिटीज हैं, सर्विसेज हैं, उसके अंदर क्या डिफरेंसेस हैं. This is just one of the many examples that illustrate the immense benefits science brought to many such ordinary people. But can we call it a panacea to all human problems? जिसमें आपने आप क्वेश्चन भी दे दिया, ठीक है. In this essay अभी thesis statement आ गया. In this essay we will discuss the origins of science and technology and the positive impact it has had. We will evaluate the challenges it poses to humankind and see whether it can be called a panacea to all our problems. Finally, we will conclude with the steps we must take to make the scientific enterprise beneficial to all. उसके बाद फिर जो है मेन बॉडी ऑफ द एसे आ जाएगा और फिर कंक्लूजन पैराग्राफ आ जाएगा. फिर आप उस कंक्लूजन पैराग्राफ के अंदर आपका स्टैंड क्लियर हो जाएगा और आपका सॉल्यूशंस आ जाएंगे. ठीक है, कैसे हम जो है साइंस को ज्यादा डेवलप कर सकते हैं ताकि एग्रीकल्चर को और ज्यादा बेनिफिट हो. ठीक है, तो फिर रियोट्रिकल पैराग्राफ आप देख लेते हैं. गोइंग बाय गांधी जी talisman, the ultimate measure to determine whether our scientific and technological endeavor is a panacea or not is to see how far can we launch rockets or is not to see how far can we launch rockets or how tall or how tall can we build skyscrapers. The ultimate test is to check whether it helps the poorest of the poor like Narayan. Science and technology must be carefully nurtured and guided to make it beneficial to all of humanity. तो आपने जो इंट्रोडक्शन के अंदर नारायण की स्टोरी दी और रियोटिकल पैराग्राफ के अंदर एंडिंग के अंदर आपने गांधी जी के तलिस्मान का कॉन्सेप्ट देकर आपने उस रियोटिकल पैराग्राफ के अंदर जो आपने नारायण का एग्जांपल दिया था इंट्रोडक्शन के अंदर, उसको आपने उसमें खत्म कर दिया उससे आपने ऐसे को. तो उससे बहुत ही एक अच्छी एंडिंग मिल गई आपको और आपका जो इंप्रेशन है ऐसे जो ऐसे इवेल्युएटर है उसके माइंड के ऊपर बहुत ही अच्छा इंप्रेशन इससे जाएगा और आपको मार्क्स जो हाईएस्ट मार्क्स मिलने की जो पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाएगी. ठीक है, अब देख लेते हैं ऐसे के अंदर एक फ्लो कैसे होना चाहिए. फ्लो इज द सेंस दैट ईच सेंटेंस बिल्ड्स ऑन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्रीवियस वन. ठीक है, when two sentences are written in succession, we instinctively make a connection between them. Consider the following paragraph. ये paragraph देखिए. Accountability is needed for effective governance. All acts of omission and commission by the officials must be made answerable to the public. RTI Act is one of the key legislations that strengthens accountability. Transparency and fairness in decision making has been ensured as most of the government documents are now made accessible to the public. Corruption and leakages in many government schemes such as PDS and Manrega are controlled by other similar tools such as social audit, citizens charter and e-governance. Right to public service law needs to be enacted to further strengthen accountability. अब ये पैराग्राफ जो है ग्रामेटिकली तो करेक्ट है पर इसके अंदर कोई फ्लो नहीं बन पा रहा है. हमें पता ही नहीं चल रहा कि हम एक लाइन के अंदर हम कौन सी बात कर रहे हैं और दूसरी लाइन के अंदर हम क्या बात कर रहे हैं. ठीक है, और कोई भी चीज कनेक्टेड नहीं दिख रही है. ठीक है, आउट दिस पैराग्राफ साउंड choppy and nonsensical, right? Though each sentence is grammatically correct, we don't see how it is connected to the previous one. The first sentence talks about accountability, then the subject shifts to acts of omission and commission by officials. Next comes transparency, and finally the subject moves to corruption and leakages in MG Narega. No rhyme or reason to think of to this kind of writing. ठीक है, ऐसी राइटिंग में कोई ना कोई राइम बन रहा है ना कोई रीजन बन रहा है. ठीक है, तो when readers come across such jumbled writing, it leaves them frustrated. अब देख लेते हैं. Now consider the same paragraph rewritten. For effective governance, we must have accountability. It is the mechanism. What accountability? It is the mechanism through which the public can hold the officials answerable for their acts of omission and commission. In India, one of the key legislations that strengthened accountability is the RTI Act. This act made government documents accessible to the public, ensuring transparency and fairness in decision making. RTI, along with other tools such as social audit and independent media, has been fairly successful in unearthing major scams such as 2G and Commonwealth Games. Now the time has come to further strengthen accountability by enacting the right to public service law.
So observe how in the above paragraph the various words connect a sentence with the previous one. The first sentence talked about accountability and why it's needed. The second sentence built on that concept by defining it. The third sentence introduces RTI, a tool through which we enforce accountability. Then we elaborate on this tool of RTI in the fourth sentence. The fifth sentence discusses other similar accountability mechanisms and the impact that they have had. Finally, having talked about accountability, its importance and various methods of enforcing it, the author concludes by suggesting further steps needed to strengthen accountability. So here's the point. You will get a sense of flow in your writing when each sentence is logically connected to the previous one. A cluster of such interconnected sentences makes one orderly paragraph. अब जो आप फ्लो बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कनेक्टिव्स का यूज कर सकते हैं. ठीक है, कनेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट हेल्प इन linking sentences and making the transitions between the sentences clear. You can employ various connectives based on the logical relationship between the sentences. A basic list of such connectives देख लेते हैं. To show a cause and effect relationship between sentences. Accordingly, consequently, hence, so, therefore, thus. To show similarity, also, likewise, similarly, in addition, to bring out contrast. But, however, in spite of, nevertheless, nonetheless, despite, to show a sequence, first, second, third, next, finally, to establish time relationship. ठीक है, after, before, currently, during, earlier, immediately, meanwhile, now, recently, simultaneously, subsequently. तो ये सब वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं. ठीक है, फ्लो जो है फ्लो को एनहांस करने के लिए और एक सेंटेंस को पिछले सेंटेंस से लिंक करने के लिए, इंटरकनेक्टेडनेस जो है डेवलप करने के लिए और एग्जैक्ट और इफेक्टिव एक्सप्रेशन अपना जो है देने के लिए. टू एड एन एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस, नेमली, फॉर एग्जांपल, स्पेसिफिकली, टू इलस्ट्रेट. द अबव टूल्स विल मेक योर राइटिंग स्मूथ, but having the flow alone isn't sufficient for good writing. Even when we use connectives, the paragraph may still feel incoherent, as this example illustrates. Artificial, अब ये example देख लेते हैं, ये paragraph देखते हैं. Artificial intelligence poses an important challenge to the country's economy. Our economy needs to generate new jobs as millions of youth enter the labor force every year. To this newly entering labor force, we must ensure the right skill development. Equipping them with adequate skills is crucial to make them employable in industries such as leather, textile, and food processing. Specifically, the food processing sector has tremendous potential to absorb the excessive labor currently concentrated in agriculture. However, to shift this workforce from agriculture to industry, we must first strengthen the manufacturing sector. This sector is being promoted by the government through the Make in India program. इसके अंदर फ्लो तो है पर कोहेरेंसी नहीं है, ये कोहेरेंट नहीं है. ये in this paragraph each sentence begins where the previous ends. There are adequate connectives too, but when you read it you don't really know what the writer wants to convey. यार भाई कहना क्या चाहते हो. पहले तुमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करी और फिर तुम जो है जॉब्स के ऊपर चले गए, तुमने फिर जॉब्स के बारे में पूरी बात कर दी. ठीक है, तो तुम्हारा एक सेंटेंस पिछले सेंटेंस से कनेक्टेड तो है, पर आखिर इस पूरे पैराग्राफ का तुम्हारा क्रक्स क्या है, इस पूरे पैराग्राफ में तुम कहना क्या चाहते हो. ठीक है, तो बट व्हेन यू रीड इट यू डोंट रियली नो व्हाट द रीडर वांट्स टू कन्वे, एज इट फील्स लाइक एन incoherent rambling about disparate topics and connected topics. The missing piece here is coherence. तो coherence देख लेते हैं कैसे के अंदर कैसे आएगी. तो readers not only want a natural transition between sentences but also look for a unifying idea and underlining theme in each paragraph. तो एक पैराग्राफ के अंदर जो है सारे सेंटेंसेस एक ही पर्टिकुलर थीम से कनेक्टेड होने चाहिए. ठीक है, आपको एक ही आइडिया के ऊपर बात करनी है पूरे अपने उस पैराग्राफ के अंदर. This unifying idea is what makes a paragraph coherent. ठीक है, before we understand coherence, let's first clarify the concept of topic of a sentence. एक सेंटेंस का टॉपिक क्या होता है. The topic is that part of a sentence about which something is being said. ठीक है, जिसके बारे में हम उस पैराग्राफ के अंदर बात कर रहे हैं, जिस टॉपिक के बारे में, जिस विषय के बारे में हम उस पैराग्राफ के अंदर बात कर रहे हैं, है ना, जिस चीज के बारे में हम उस पैराग्राफ के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, वही उसका यह टॉपिक है. The word topic refers to the central point of a sentence. This should not be confused with the script of a sentence. Consider these examples. Research has shown that to improve learning outcomes in school-going children, the government must invest in teacher training programs. तो इसके अंदर सब्जेक्ट क्या हो गया, इसका सब्जेक्ट हो गया रिसर्च, गवर्नमेंट. ठीक है, तो इसके टॉपिक्स क्या हो गए, लर्निंग आउटकम. ठीक है, हम लर्निंग आउटकम की बात कर रहे होगी, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कि हम उसकी बात कर रहे हैं. ठीक है, फिर दूसरा है मैनी एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज इंडिकेट दैट इन सिंपल एग्रीकल्चरल सोसाइटीज विद नो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क बियॉन्ड विलेज एंड ट्राइब, human violence was responsible for about 15% of deaths, including 25% of male deaths. तो इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है,
एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज, ठीक है, ह्यूमन वायलेंस, और टॉपिक क्या है इसके, एग्रीकल्चरल सोसाइटीज और ह्यूमन वायलेंस, क्योंकि हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, अपने पैराग्राफ के अंदर, ठीक है। फिर डिपिक्टेड इन बोल्ड आर द सेंट्रल आइडियाज ऑफ दो सेंटेंसेज अदरवाइज कॉल्ड देयर टॉपिक्स। वंस वी grasp this concept, it is easy to understand how to make our paragraphs coherent. Fundamentally, when the topics of all the sentences in a paragraph are related to a limited set of ideas, the paragraph feels coherent. That and a coherent paragraph has two parts. ठीक है, a starting sentence that briefly introduces the key topics and the body of the paragraph which discusses the topic mentioned in the first sentence. For example देख लेते हैं, despite its many benefits, artificial intelligence poses a serious challenge to the country's economy and its social order. As per World Economic Forum report, AI is set to displace 75 million existing jobs through automation. On the other hand, with 50% of India's population under 25, the need for new jobs is only going to increase. But as AI brings in efficiencies, more and more companies will be inclined to replace labor with AI algorithms, leading to a serious unemployment crisis. In addition, critics also argue that AI worsens inequality as it tends to concentrate capital in the hands of a few wealthy entrepreneurs. With rising inequality and displaced labor, the consequences for the economy and the society can be dangerous. It will lead to social unrest, political upheaval, and a breakdown of law and order. If we are to harness AI's benefits, it's imperative that we must first address these challenges. Otherwise, the topic of the sentence in the observe the topics of the sentences in the paragraph: AI, jobs, automation, economy, society, unemployment, inequality, labor. They are all closely linked to the one unifying idea: the negative impacts of AI on the economy and society. The first sentence briefly introduces these topics, with the rest of the paragraph discussing them. This gives the reader a sense of unity and coherence. A series of such coherent paragraphs with logically flowing ideas makes a coherent essay. फिर transitioning between paragraphs, एक paragraph से दूसरे paragraph में हम कैसे जाएं? So far, we have discussed coherence within the paragraph. In order to make the whole essay coherent, we must take care to transition smoothly from one paragraph to the next. This can be done in three ways. So पहला है कि through a linking sentence. Here at the end of a paragraph, you can write a sentence that signals to the reader what's coming next. For example, let's say you have written a paragraph about the threats posed by artificial intelligence to jobs. At the end of it, you can write a linking sentence. Further, we must be mindful of the fact that artificial intelligence poses a major threat not just economically but also ethically. And in the next paragraph, you can write about the ethical issues concerning AI. फिर by asking a question, we have coherence बिठा सकते हैं एक पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ के बीच में. Here at the end of a paragraph, you write a sentence that signals to the reader what's coming next. Instead of a linking sentence, you can also add a question at the end of a paragraph so that the examiner's attention is carried to the next paragraph. To take a simple example as above, the question can be something like: thus we have examined the threats posed by AI to our economy. What about the challenges posed by AI to our ethics and morals? And in the next paragraph, you can write about the ethical issues concerning AI. यह तीसरा अपना जो तरीका है ना, अपना कोहेरेंस बिठाने के लिए एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के बीच में, तो वो है सिग्नलिंग द शिफ्ट एट द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट पैराग्राफ. Here you can simply add a word or two at the beginning of a para that signals a shift in your topic. For example, in an essay on globalization, let's say you have written a paragraph about its historical evolution and impact. So you can start the next paragraph with something like politically true, globalization has had a tremendous impact. This way the examiner immediately knows what to expect in the rest of the paragraph. फिर देख लेते हैं लैंग्वेज ऑफ द ऐसे कैसे होनी चाहिए. ठीक है, ओनली वन आइडिया इन वन पैराग्राफ. जैसा कि हमने बताया कि एक पैराग्राफ के अंदर एक ही जो है बात होनी चाहिए. ठीक है, अगर आप उसके अंदर डिस्कस करें कि एआई के बेनिफिट्स क्या हैं, तो सारे बेनिफिट्स ही उस पैराग्राफ के अंदर होने चाहिए. अगर आप बोल रहे हैं कि एआई के जो है थ्रेट्स क्या हैं, तो एआई के जितने भी थ्रेट्स हैं वो उस पैराग्राफ के अंदर पूरा होना चाहिए. ऐसा ना हो कि आधे तो आपने थ्रेट्स लिख दिए आधे पैराग्राफ में, आधे पैराग्राफ में आप बेनिफिट्स लिख रहे हैं, तो उससे जो है ना ही फ्लो बैठ पाएगा, ना ही कोहेरेंस बैठ पाएगी, ना ही आपका इफेक्टिव और एग्जैक्ट जो है एक्सप्रेशन हो पाएगा, और ना ही कंसाइसली आप चीजों को जो है एक्सप्लेन कर पाएंगे, और ना ही फिर आपके जो है वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स आ पाएंगे. तो ये चीज ध्यान रखनी है कि एक पैराग्राफ के अंदर केवल एक ही आइडिया देना है. ठीक है, फिर यूज शॉर्ट सेंटेंसेस. ठीक है, बड़े बड़े सेंटेंसेस का यूज नहीं करना. ग्रामर बहुत ज्यादा
हार्ड यूज नहीं करनी, सेंटेंसेस जो छोटे रखने हैं, वोकैबुलरी सिंपल रखनी है, ताकि कोई भी जो है उसको जो है आसानी से पढ़े और आसानी से वो समझ ले, ठीक है, फिर आपके ऐसे को। तो अवॉइड द यूज ऑफ जार्गन, जार्गन क्या होती है, साइंटिफिक टर्म्स हो गई, ठीक है, जैसे आप साइंटिफिक के ऊपर कोई ऐसे लिख रहे हैं तो उसके अंदर बहुत ज्यादा साइंटिफिक टर्म्स का, बहुत ज्यादा साइंटिफिक टर्मोलॉजीज का यूज नहीं करना, ठीक है। एग्जामिनर को हो सकता है वो चीजें उसकी ज्यादा डिटेल में ना पता हो, उससे फिर आपके मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस हैं बढ़ जाएंगे। फिर देख लेते हैं हाउ टू मैनेज टाइम ड्यूरिंग द एसे। तो 5 मिनट आप ले सकते हैं दोनों ऐसे ऐसे के टॉपिक को चूज करने के लिए। फिर 20 मिनट पर ऐसे आप ले सकते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए, ठीक है, टोटल हो गए आपके 40 मिनट, ठीक है। और फिर 1 घंटा और 5 मिनट आप ले सकते हैं राइटिंग ईच ऐसे, ठीक है। और हर ऐसे के लिए आप 1 घंटा 5 मिनट ले सकते हैं, टोटल हो गए 130 मिनट, ठीक है। और फिर 5 मिनट आपके जो लास्ट के बचेंगे वो आप लास्ट मिनट के लिए चेक्स के लिए रख सकते हैं, ग्रामर हो गया, स्पेलिंग करेक्शन हो गया, ठीक है, वो उसके लिए आप उसको रख सकते हैं। तो आप ये चीज जो है फॉलो कर सकते हैं टाइम मैनेज करने के लिए, अपना ऐसे लिखते हैं टाइम, ठीक है। अब देखते हैं कि इंट्रोडक्शन टू ए फिलोसफिकल एस्से, फिलोसफिकल एस्से अगर हम लिखने जा रहे हैं तो उसका इंट्रोडक्शन कैसे देंगे, तो वहां पे रियल लाइफ एनेक्डोट जो है एक लिखना वो बेस्ट तरीका है टू स्टार्ट ए फिलोसफिकल एस्से। द एनेक्डोट मस्ट बी कंसाइज yet be relevant to the topic at hand. In brainstorming session think of such anecdotes that best illustrate the topic, ठीक है। जब आप ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं उस फिलोसफिकल एस्से के ऊपर तो जो है ऐसे एनेक्डोट्स को जो है आप सोच लीजिए जो है बेस्ट तरीके से इलस्ट्रेट करते हैं उस टॉपिक को, ठीक है। तो फॉर इंस्टेंस अगर हम जो है इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं इस टॉपिक का कि चेंज इज द एंड रिजल्ट ऑफ ऑल लर्निंग, तो इसके अंदर हम क्या एनेक्डोट कर सकते हैं कि इन द 1980s द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु वाज confronted with a serious problem. Education levels of school-going children kept dwindling and the dropout ratio became unexpectedly high. The government had commissioned a detailed study through which it learned that ill health and acute malnutrition were the primary causes of falling education standards and high dropout ratio, ठीक है, एनेक्डोट हो गया, ठीक है। So the state government decided to introduce a unique scheme to solve the problem, the new now popular midday meal scheme. Within a couple of years, the education level started rising and the dropout ratio was firmly kept in check. Even today, as Jean Dress observes, the midday meal scheme is the primary reason for the high performance of Tamil Nadu in primary education compared to any other state. This incident proves the age-old saying that change is the end result of all learning. तो अपने एनेक्डोट को जो है देके आपने आपके टॉपिक को एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। तो बोथ लर्निंग एंड चेंज आर इनडिस्पेंसिबल इन ऑर्डर फॉर अस टू बी बेटर ह्यूमंस, बिल्ड बेटर सोसाइटीज एंड शेप ग्रेट नेशंस। अब देख लेते हैं कि मेन बॉडी और फिलोसफिकल एस्से कैसे देख सकते हैं। तो हम फोकस करना है इलेबोरेशन के ऊपर और फिर उसके एनालिसिस के ऊपर, ठीक है। तो द एब्स्ट्रैक्टनेस ऑफ फिलोसफिकल एंड कोट बेस्ड एस्सेज कट बोथ वेज, के जो है फायदे भी हैं नुकसान भी हैं, ठीक है। एक पहला से नुकसान क्या है कि ऑन वन हैंड यू डोंट हैव एनीथिंग कंक्रीट टू राइट अबाउट, ठीक है, कोई जीएस के जो है टॉपिक्स नहीं होते, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होती नहीं है, ठीक है, इनको पर लिखने के लिए। बट दूसरे तौर पे बट ऑन द अदर हैंड दे ऑफर यू अ कंसिडरेबल फ्रीडम टू चूज द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ योर एस्से, ठीक है। आप स्ट्रक्चर और कंटेंट को आप खुद चूज कर सकते हैं, ठीक है। द एग्जामिनर्स आल्सो रीड योर एस्से विद एन ओपन माइंड बिकॉज दे नो दैट देयर कांट बी जस्ट वन वे ऑफ राइटिंग सच एस्सेज, ठीक है। सो फॉर फिलोसफिकल एस्सेज यू डिटरमाइन द इंटरप्रिटेशन, द आउटलाइन एंड द फ्लो ऑफ इट। आप ही हर चीज डिटरमाइन करते हैं अपने फिलोसफिकल एस्से के लिए, ठीक है। तो हियर्स a useful way to build the main body for this kind of essay. तो मेन बॉडी essentially has two parts, पहला हो गया इलेबोरेशन और दूसरा एनालिसिस। तो इलेबोरेशन के अंदर हमें जो है वेरियस सेक्टर्स के अंदर उसके ऊपर हमें आर्गुमेंट देना है, ठीक है। तो वेरियस कंटेक्स्ट में हम दे सकते हैं। तो इलेबोरेशन ऑफ फिलोसफिकल एस्से टॉपिक्स टेंड टू बी जनरल ट्रूथ दैट वी ऑल एग्री अपॉन, ठीक है। देयरफॉर यू कांट राइट आर्गुमेंट फॉर एंड अगेंस्ट सच स्टेटमेंट्स नहीं लिख सकते, ठीक है, क्योंकि अगर वो दे रहा है कि मान लीजिए ऐसा उसने टॉपिक दे दिया, जैसा ये टॉपिक था चेंज इज द एंड रिजल्ट ऑफ ऑल लर्निंग, कि भाई चेंज हर बारी जो है रिजल्ट होता है लर्निंग का, तो इसका आप फॉर और अगेंस्ट नहीं दे सकते, क्योंकि एक जो है एक अपना यूनिवर्सल ये ट्रूथ है, ठीक है, एक फैक्चुअल ये स्टेटमेंट है, ठीक है। और इन सच ए सिनेरियो वन यूजफुल वे टू बिल्ड द एस्से इज टू इलैबोरेट द स्टेटमेंट इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट एंड एम्पलीफाई द गिवन स्टेटमेंट, ठीक है। आपको पॉलिटिकल तौर पर, इकोनॉमिक तौर पर, सोशल तौर पर, ज्योग्राफिकल तौर पर, हिस्टोरिक तौर पर, इंटरनेशनल रिलेशंस के बेसिस पर, साइंस एंड टेक के बेसिस पर, एनवायरनमेंट के बेसिस पर, डिजास्टर मैनेजमेंट के बेसिस पर और अपना एथिकल बेसिस पर आप उसको जो है इलैबोरेट कर दीजिए कि वो जो अपनी जो यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, जो कोड दिया हुआ है फिलोसफिकल एस्से के अंदर, वो कैसे अलग अलग कंटेक्स्ट के अंदर ट्रू होल्ड करती है, ठीक है, वो कैसे जो है ट्रूथ वो होल्ड करती है, तो ट्रू है अलग अलग कंटेक्स्ट में, ठीक है। तो ऑल्सो सब्सटेंशिएटिंग ईच कंटेक्स्ट विद एग्जांपल्स विल मेक द एस्से मोर परसुएसिव। और जो अलग अलग आप कंटेक्स्ट दे रहे हैं उसके अंदर मान लीजिए पॉलिटिकल आप दे रहे हैं कि चेंज इज द रिजल्ट ऑफ ऑल लर्निंग, तो इसमें आप दे दीजिए कि पॉलिटिकल तौर पर
किस तरीके से डेवलप हुए हैं अलग अलग नेशन, ठीक है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ, इंडिया के अंदर जो है पहले ब्रिटिश रूल था, फिर डेमोक्रेसी आई। तो इसमें एग्जांपल्स के साथ आप जो इलेबोरेट करेंगे तो आपका जो एस्से है वो बहुत ही ज्यादा सब्सटेंशियल हो जाएगा, उसका जो इफेक्ट है रीडर के माइंड के ऊपर, एग्जामिनर के माइंड के ऊपर, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और आप एग्जैक्ट और एफिशिएंट तरीके से आप अपनी चीज को जो है अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाएंगे। So, while elaborating the statement in different contexts, do not restrict it to a narrow reading of the statement। उसको जो है एक liberal interpretation दीजिए और एक्सप्रेस कीजिए क्रिएटिवली। केवल जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसी के बेसिस पर नहीं सोचना, अपने दिमाग को थोड़ा ब्रॉड तरीके से ले जाकर और ब्रॉड तरीके से उस टॉपिक के बारे में सोचना है, ठीक है। एनालिसिस, तो वंस यू elaborate the statement in various contexts, so the next segment in the essay will be the analysis of the topic। This can be accomplished by generating 2 or 3 critical questions on the topic। उस टॉपिक के बारे में आप पूछ सकते हैं कि ये क्या है टॉपिक, ये क्यों है, ये जो है ये क्यों है, तो उसके बाद कैसे हम इस चीज को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। ये सर, so these analysis questions usually deal with the what, क्या, when, कब, एंड हाउ ऑफ द टॉपिक, कैसे, एंड द इश्यूज प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद दैट टॉपिक, ठीक है। ईच पैराग्राफ शुड बी अ ब्रीफ डिस्कशन ऑन दैट क्वेश्चन, ठीक है। आप देख लेते हैं कंक्लूजन कैसे दे सकते हैं फिलोसफिकल एस्से का। तो इन द एनालिसिस सेक्शन इफ यू हैड डिस्कस एनी प्रॉब्लम्स, अगर आपने डिस्कस करी थी, इश्यूज डिस्कस किए थे, ऑब्स्टेकल्स अगर डिस्कस किए थे कंसर्निंग द टॉपिक, तो डेली कंक्लूजन के अंदर सबसे पहले आपको जो है सोल्यूशन देने हैं, ठीक है, क्योंकि आप सिविल सर्वेंट हैं, आप बनने जा रहे हैं, आपको सोल्यूशन जो है प्रोवाइड करना ही है। तो देन आइडियली यू मस्ट एड्रेस देम इन द कंक्लूजन बाय सजेस्टिंग सोल्यूशंस। That way, conclusion assumes an optimistic tone with a vision for a better future. Finally, end the essay with a rhetorical paragraph. So, to sum up, a general framework for a philosophical is as follows। सबसे पहले हो गया एनेक्डोटल इंट्रोडक्शन, हो गया एनेक्डोट के तौर पर आपने इंट्रोड्यूस कर दिया उस टॉपिक को, फिर मेन बॉडी के अंदर आपने इलेबोरेट कर दिया, ठीक है। एक्सप्लोरेशन ऑफ द टॉप कॉन्सेप्ट इन इलेबोरेशन है यहाँ पे, ठीक है। ये राइटिंग मिस्टेक है, इलेबोरेशन स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, इलेबोरेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट। मेन बॉडी के अंदर फिर आपने जो है कर दिया एनालिसिस ऑफ द स्टेटमेंट by discussing important questions but why and how of the topic। फिर जो है उससे आपने उसको टॉपिक को एनालाइज कर दिया, ठीक है, कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट जो था टॉपिक का, ठीक है। ये जो टॉपिक था कि चेंज इज द एंड रिजल्ट ऑफ ऑल लर्निंग, तो ये क्या है और ये क्यों होल्ड करता है होमनेस, और ये कैसे इसको हम जो है और ज्यादा एनहांस कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है। फिर है कंक्लूजन, तो सॉल्यूशंस एंड सजेशंस फॉर अ बेटर फ्यूचर, और फिर कंक्लूजन में फिर डाल देना है रियोस्टिकल पैराग्राफ, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पर हम इसको जो समझ लेते हैं कि एग्जांपल है, मान लीजिए टॉपिक ये है कि बेस्ट फॉर एन इंडिविजुअल इज नॉट नेसेसरली बेस्ट फॉर द सोसाइटी। ये 2019 ये मेंस का टॉपिक है, ठीक है। मेंस के ऐसे आया था ये इसके ऊपर कि बेस्ट फॉर एन इंडिविजुअल इज नॉट नेसेसरली बेस्ट फॉर द सोसाइटी, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि एनेक्डोटल इंट्रोडक्शन 150 वर्ड्स में हमें लिखना है लगभग, तो हम वो कैसे लिख सकते हैं। तो टॉक अबाउट द 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस एंड नरेट हाउ व्हाट वाज बेस्ट फॉर इंडिविजुअल फर्म्स, चीप क्रेडिट, सबप्राइम लेंडिंग, हायर प्रॉफिट्स टर्न्ड आउट टू बी डिजास्टरस for the society, so which goes on to prove that what is best for an individual person or organization may not necessarily be best for the society, ठीक है। तो आपने एनेक्डोट्स के बेसिस पर आपने जो है एस्से के इंट्रोडक्शन के अंदर आपने डाल के और जो एस्से का जो टॉपिक था उसे एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। फिर इलेबोरेशन ऑफ द स्टेटमेंट इन द मेन बॉडी, 400 से 500 वर्ड्स में आपको उस टॉपिक को इलेबोरेट करना है अलग अलग कंटेक्स्ट के अंदर, अलग अलग चैप्टर्स के अंदर। तो पॉलिटिकल तौर पर कैसे जो है वोट बाइंग और रिगिंग मे बी बेनिफिशियल फॉर एन अनस्क्रैपलेस पॉलिटिशियन बट हैज डिवास्टेटिंग कंसिक्वेंसेस फॉर अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। तो इसमें आपको एग्जांपल्स दे देने हैं, ठीक है। कुछ जो इंस्टेंसेस हुए हैं इंडिया के अंदर भी, है ना, जहां पर वोट बाइंग के इंस्टेंसेस हुए हैं, तो इसके एग्जांपल अगर आप देंगे तो बहुत ज्यादा सब्सटेंशियल वेट आपका पड़ेगा इससे का, ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल आप एग्जांपल दे सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आप तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं टॉपिक को कि पर्सनल लिबर्टी इज बेस्ट फॉर एन इंडिविजुअल बट अनचेक्ड फ्रीडम फॉर एन इंडिविजुअल इज नॉट बेस्ट फॉर द सोसाइटी। फॉर एग्जांपल द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 19 imposes reasonable restrictions on a speech that incite violence। फिर हिस्टोरिकल आप क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट क्या दे सकते हैं इस टॉपिक का कि बेस्ट फॉर इंडिविजुअल इज नॉट बेस्ट नेसेसरली बेस्ट फॉर सोसाइटी, कि वर्ल्ड वॉर्स वर फॉट फॉर द सेल्फिश इंटरेस्ट ऑफ अ फ्यू पावरफुल इंडिविजुअल्स एंड एंडेड इन कैटास्ट्रोफिक कंसिक्वेंसेस फॉर ह्यूमैनिटी। और फिर इकोनॉमिक तौर पर कि लेजिस फेयर कैपिटलिज्म इज बेस्ट फॉर वेल्दी एंटरप्रेन्योर्स एंड प्रिविलेज्ड पीपल बट इट डजंट एंश्योर इक्वालिटी और सोशल जस्टिस फॉर एवरीवन। फिर इंटरनेशनल एस्पेक्ट में आप कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं टॉपिक को कि यूएनएससी एज इट एग्जिस्ट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ अ स्मॉल सेट ऑफ नेशंस, दे गेट टू कॉल द शॉट्स एंड वीटो अ डिसीजन बट दिस इजंट हेल्पफुल फॉर अ ग्लोबल सिक्योरिटी एज द सीरियन क्राइसिस शोज। फिर एनवायरमेंटल तौर पर आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि व्हाट हैज बीन बेस्ट फॉर एन इंडिविजुअल स्पीशीज ह्यूमंस इज नाउ रैकिंग हैवॉक विद द ग्लोबल क्लाइमेट causing irreparable damage to the planet। Don't confine yourself to these contexts or examples, think of interpreting the statement in other sectoral dimensions such as business,
मीडिया, साइंस एंड टेक, गवर्नमेंट, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा एंड ऐड योर ओन एग्जांपल्स। ठीक है, इसमें जो जितने ज्यादा एग्जांपल्स और जितनी ज्यादा आप डायमेंशन सोच पाएंगे खुद की, उतनी ज्यादा आपका जो है ऐसे है वो उतनी ज्यादा इंप्रेसिव होगा। ठीक है, और दिस एक्सरसाइज विल हेल्प इंडस्ट्री। फिर एनालिसिस करना है उसका 200-250 वर्ड्स के अंदर, 3-4 क्वेश्चन पूछने हैं, उनका फिर जो आंसर देना है क्वेश्चन का। तो व्हाट ड्राइव्स द इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल? मनी है, पैसा है, ठीक है, पर्सनल ग्रोथ हो गया, वेल बीइंग हो गया, फ्रीडम हो गया। ठीक है, और व्हाट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी? इक्वालिटी, फेयरनेस, जस्टिस एक्सेट्रा। तो व्हाट कॉजेज द डाइवर्जेंस बिटवीन द इंडिविजुअल एंड सोसाइटल इंटरेस्ट? अनचेक्ड पावर, ओपेक लॉज, अनफेयर पॉलिसीज, डेकेडेंट इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा। फिर अपने को कंक्लूजन दे देना है 400-500 वर्ड्स का कि हाउ कैन बी अलाइन द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल विद दोज ऑफ द सोसाइटी। कैसे हम जो है इंडिविजुअल्स और सोसाइटी के इंटरेस्ट को जो है मैच कर सकते हैं कि हमें जो है सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस, जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो मोरल्स हैं उनको हमें जो है फॉलो करना है, और हमें जो है इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन जैसे कि अपना सुप्रीम कोर्ट हो गया, आरबीआई हो गया, और अपना कैग हो गया, यूपीएससी हो गया, इन सबको हमें जो है स्टैंडर्ड करना है, अकाउंटेबिलिटी जो है शेयर करनी है, आरटीआई जो है ज्यादा से ज्यादा जो है प्रमोट करनी है, और जो हम ग्रेट लाइफ जो है उनसे हम सीख सकते हैं, और दूसरा हम जो अपने एपिक्स हैं उनसे भी हम सीख सकते हैं, और जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो अपने जो सिविल सर्वेंट्स के एग्जाम्पल्स हैं जैसे अशोक खेमका हो गए, या फिर अशोक खेमका हो गए, या फिर सत्येंद्रनाथ वो हो गए, दुबे हो गए, उनके एग्जांपल से जो हम सीख सकते हैं। और बैलेंस ऑफ पावर जो है हमें इंश्योर करना है, चेक्स एंड बैलेंसेस हमें जो है स्ट्रेंथन करने हैं, डेमोक्रेटिक कंसेंसस हमें जो है मेंटेन करना है, और फिर आगे समरी पैराग्राफ टू ब्रिंग योर होल राइट अप टुगेदर। तो समरी में आपको दे देना कि हमने पहले एनेक्डोट से उसको एक्सप्लेन किया, फिर हमने उसको अलग अलग सेक्टर्स के अंदर अलग अलग एस्पेक्ट्स में हमने उस टॉपिक को इलैबोरेट किया, फिर हमने उसको एनालाइज किया अलग अलग क्वेश्चन पूछकर, फिर हमने उसको जो है बताया कि हम जो है कैसे इस चीज को अचीव कर सकते हैं, सोल्यूशन सब क्या ले सकते हैं, और जो है हम इसलिए अब जो है एंड कर रहे हैं। ठीक है, इट मस्ट ब्रीफली रिकैप योर सेंट्रल पॉइंट इन अ 3-4 सेंटेंसेस। फिर रियोट्रिकल पैराग्राफ टू एंड द ऐसे, फिर आपको रियोट्रिकल पैराग्राफ से ऐसे को एंड कर देना है। ठीक है, कि हमें जो है ये चीज हमें जो है करने की जरूरत है, पर इसके साथ साथ और भी चीजें हमें जो है करने की जरूरत है, तभी हम जो है एक अच्छी सोसाइटी और अच्छा एक नेशन बेहतर तरीके से सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस हम इंश्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा एक ब्रॉड ओवरव्यू था। दिस वाज अ ब्रॉड ओवरव्यू about how you can deal with the essay topic, essay paper asked in the UPSC mains exam. And also I would suggest you to read a lot of toppers essays which are available for free on the online platform, so that you get an idea about how the toppers structure their essays, and how you can also learn from them to better structure your content. So I hope that all the questions that you have had regarding how to prepare for essay and how to score good marks in this paper would have been solved once you watch this video completely, and also to learn about the topics, complex topics, also to know about the complex topics, better understand the complex topics in a easy to understand manner. You can follow the Learn by Maps initiative of the Simran IAS Academy. What they do, that they use the infographics, flow charts, diagrams, and a lot of easy to understand language to make the complex topics that are very difficult and very complex to understand from the standard sources, to make those topics understandable to the students in a very easy to comprehend manner, so that you better understand that topic, and your level of understanding in that topic enhances a lot, and also you are able to better recall that information in the exam, so that you eliminate the statements in the prelims, and also in mains you are able to better analyze that particular question which you have studied from the notes prepared by the Simran IAS Academy, known as the Learnbymaps notes. Okay, so to get a sample of these notes, you can contact the Simran IAS Academy, and if you like the presentation of these notes, you can contact them to get a copy of the notes for yourself. So thank you so much for watching the video. I hope once again that all your doubts regarding the essay exam would have been solved once you have watched this video. So thank you so much. Have a great day.